S. Chan presents Educational Video Lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know India contributes to around 6% to the world economy in terms of GDP, topping the list by third position in the total contribution, or the total 10 number of contributors in the world economy. And obviously US being the topmost ranker, followed by China. And why do you think this all happens? How does a specific country becomes the greatest contributor to the world economy? Just by excelling in the economy, just by excelling in their business, right? And business can only be improvised if we analyze the business environment altogether of a specific economy. So if any country which is excelling in the terms of business, it is because of its business environment is very much pro-business. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. So welcome to S. Chan Academy. My name is Saurabh Gupta. This video lecture's topic is the role of government policy in shaping business environment and performance. So as the topic suggests, clearly we will start with the role of government in any economy. How does policies of a specific government shapes the future of business in that country, right? So talking about government policy, it plays a critical role in shaping the business environment and determining the performance of a business. That is what I have made a statement right now. But how? So the government sets the legal framework. So there are different aspects when we talk about framing or determining the performance of business. There will be certain factors. There will be some amount of factors which will contribute to the shaping or determining the performance of business. We are talking about these factors only. So the first factor is legal framework that business operates within. It is responsible for creating regulations, standards, and policies that affect businesses. Now, if a government doesn't set some sort of regulations, or if a government doesn't come up with some sort of licensing or something like that, every now and then some people will start their own venture and they will not see to the quality standards. अब मेरा मन कर रहा है मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, बट मेरे को FSSAI का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा. मैं आराम से अपना एक रेस्टोरेंट खोल के उसको स्टार्ट कर दूंगा बिजनेस को. बट अब ये लाइसेंस लेना ज़रूरी क्यों है? ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने रहें, हाइजीन स्टैंडर्ड्स बने रहें, लोग जो खाना खाएंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एलिमेंट. So when people will eat that food, it should be guaranteed that it is hygienic, it is germ-free, it is made with the proper proper caretaking, right? So when we talk about businesses, they operate within a legal framework, and any country wouldn't allow any business to go beyond the legal framework, or they cannot go and do illegal activities. They cannot. So फिल्मों में देखा होगा आपने काम कर रहे हैं फिशरीज का, उनका जो कंपनी का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है, काम है, वो है फिश सप्लाई करना, बट उसके पीछे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं. क्या ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, राइट? सो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, लीगल फ्रेमवर्क के बाहर अल्ट्रा वायरस हो जाते हैं चीज़ें, राइट? सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लीगल फ्रेमवर्क. देन इट प्रोवाइड्स stable economic environment. Yes, when we talk about government, see, first of all, to make a stable economic environment, there must be a stable government in a country, right? Like we have in India nowadays, around past 9 years have passed, there was only one government ruling the country. So obviously, first 5 years and then second 5 years, when we see
through the course of work structure they are doing, obviously in 5 years when one cannot accomplish all the goals and tasks. So they need one more term or two more terms to ultimately accomplish all those tasks which they have promised or planned to, right? So ultimately stable economic environment बनाते हैं through economic policies, through government policies, and वो होगा कैसे जब stable government भी होगी, right? Moving to the next point, it states establishes and enforces laws and regulations. Obviously, government क्यों बनाते हैं कि अच्छा संसद में क्या होता है? When we see certain videos or live telecast of parliament, we see a lot of MPs talking to each other, or they are basically debating to each other that okay, some are pro-government, some are anti-government. So pro-government will say that all the policies initiated by government are right and they will support that policy, and they would try to pass that bill in the motion in the parliament, right? In both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. But those who are against it will not favor the exact motion, right? The motion which is in trial. So obviously, this particular thing called enforcement of law and regulation. See, हमारे यहाँ execution of law is done by police department, but formulation is done by these leaders in the parliament, and parliament is the responsible body, and wherein members of the government will be sitting in the parliament who will be making laws and governing laws, right? So that's how they establishes and enforces laws and regulations, right? Moving to, it promotes competition. So government policies, or the role of government is to promote competition. Now when we talk about competition, we see a lot of hoarding being done by the suppliers, a lot of stocking done by the suppliers, wherein the prices of the products might go up, or sometimes they try to curb the price of the products. So there are monopolies which will try to curb the products. So government will always want that there should be a fair and healthy competition available in an economy, and wherein they will try to bring in new competitors, they will try to bring and give new choices to the customers, right, in an economy, and they will always try that their citizens should be happy enough with the policies given by them. So when we talk about competition, competition is something which is created when businesses play through the factors of the economy. They play through the demand and supply mechanism of the economy. But it will only happen when it is regulated, when it is being regulated by the government or some authority, wherein, like for example, we have Competition Commission of India, which is set up by government again, right, which will look into the criterias of government, which will look into the criterias of competition, whether it is being followed properly, whether it is healthy enough or not, right? Moving to the next point, protects intellectual property rights, IPRs. Now, आपने IPRs के बारे में सुना होगा. IPRs होते हैं जैसे कि आपका कॉपीराइट. मान लो मैंने कोई बुक लिखी और मैंने उस पर कॉपीराइट ले लिया, मैंने कोई म्यूजिक क्रिएट किया, मैंने उस पर कॉपीराइट ले लिया, राइट? मतलब अब मेरा म्यूजिक, मेरा कंटेंट, मेरी कॉपी, जो किताब लिखी है मैंने, उसका जो कंटेंट है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता. दैट इज वन सॉर्ट ऑफ IPR. देन कुछ लोग अपने डिस्कवरी पे, अपने नई खोज पे दे टेक पेटेंट ऑन इट, राइट? मैंने कुछ केमिकल्स का लोचा किया और एक साथ बना के कुछ नया केमिकल बना दिया विच इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन, मैं पेटेंट ले सकता हूँ उसका, राइट? या फिर रेमडेसिविर करके एक अभी आपने कोविड-19 के टाइम पे सुना होगा, एक वैक्सीन या जो भी इनटेकिंग मेडिसिन थी, जो उसके ऊपर भी पेटेंट लिया गया था, राइट? सिमिलरली बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जिन पे लोग अपना राइट टू पजेस एंड राइट टू यूज डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट intellectual property right, is being protected by the government regulations. Now government regulations means that government here is trying to protect the right of a particular person to use that particular, or to possess that particular discovery or the artistic thing which they have brought in the market, right? And they have all the rights to sell also,
those rights to someone else, or to give it on lease to someone else, or to give the right to use to someone else, right? Implementing tax policies. Again, see, recently we have heard of the advent of GST. So in 2017, 1st July, GST was brought in by the government itself, and our own Prime Minister declared that GST is being implemented on 1st July 2017, right? So what is the gist? That any tax policy which has to be brought in India, because tax is a kind of revenue to the government, and when Indian government or any other economy thinks of implementing a tax in an economy, they will always start with proposing that particular tax structure. Then they will start thinking about that particular tax structure. Okay, how are we going? They will discuss how are we going to implement it, what sort of impact it would have on the citizens of India, right, or the companies which are functioning in India or any other economy. So they will see the pros and cons of tax policies which they are going to bring up, right? And the best example which we can get is the GST, which was brought very recently in your age, right? So implementation of tax policies, then regulating business activities. As I told, no business can go and do illegal activities. So you will have to stick to your object clause, which you have stated in your memorandum or articles of association. So you will have to clearly stick to the object of your company. You cannot deviate from the object and do something which is not permitted, which is not economy friendly, which is not India friendly, or which is not any country friendly, right? So you cannot do that. So regulation of business activities, like for example, there are definitely numerous things to regulate, like labor market or labors which is available in your firm, that is to be regulated regularly. Right, so there are laws relevant to labor, there are laws relevant to the functionality of labor, there are laws relevant to the education of the children of that labor working in a particular firm, right, medical facilities being available to that particular labor, right. There are numerous n number of activities which are to be regulated. Talking about international trade policies. Now, we have a separate sort of chapter or say unit which is explaining international trade, wherein we'll be talking about several institutions, GATT, UNCTAD, and several institutions which will be talking about the international trade policies which is being regulated by those institutions, organizations, right? So here in international trade policies are also, obviously every country will have their own say in a particular policy which is international, right? So India being an economy also has some sort of say and some sort of stakeholding in the policies being generated by WTO, GATT, UNCTAD, or any other institution like that, right? So we'll talk about this particular point in detail in that particular unit. I am skipping for now, right, this particular point in international trade policies. Moving to the environmental policies. Okay, now we have a setup institution called NGT. So we have an institution called environmental, which regulates environmental policies, called NGT, National Green Tribunal. Or there are other organizations which are talking about climate change, which are talking about environmental policies, which are talking about carbon trading, which are talking about carbon emission. So to your amazement, there is one fact which is available throughout the world, that India is the only country, the topmost country, which is targeting to eradicate the carbon emission totally by 2070. And we are the best performers to that particular promise which we have made, right? So the first country being under the G20 countries, we are the first one to achieve that particular target. So the first country, being the first country, we have got, and we have initiated that particular thing also, right? So we have got responsibilities also to ask other countries or to regulate other countries also to come on the same page, come on the same platform and contribute towards the climate change, right? So environmental policies, obviously we will have, when we promise to give 0% emission of carbon, we need to implement that in our day-to-day activities also. We need to ask or regulate our organization to please reduce the emission of carbon units, right?
So moving to labor policies, I've already discussed a lot of labor policies. We'll skip that. Protects consumers. Okay, yes, Consumer Protection Act, and then Competition Commission of India being an institute, which is or a governing body, which is regulating the exact competition in the market, right? So protects consumers through for exactly the unfair practices done by the suppliers or the sellers. So they protect against those sellers. The Consumer Protection Act, or the consumers are being protected by the government in that sense. Okay, and Jago Grahak Jago scheme or something like that, the campaign run by government. You know it all, right? Jago Grahak Jago was one of the campaign run by the government in that case. Moving to encourages innovation. Yes, government always wants that new discoveries are made on a day-to-day basis. New skills are being generated. Upgradation of technology happen every day and night, right? And then government would obviously want that one should be encouraged towards innovation. So there should be several ways to do a specific thing, right? And recently we have launched Chandrayaan 3, if you know it. We have launched Chandrayaan 3. And in that sense, it is very clear that we are trying to achieve self-sustainability, that we are no more dependent on other countries which are technological savvy, and they are going to, we are going to depend on them. That is not the case now. We are trying every day, every night that we become excelling, we excel in our technological upgradations on a day-to-day basis, right? Then fosters job creation. Obviously, any business, when we encourage business, it will create employment, it will create or generate jobs. It promotes international trade. Again, international trade will happen if your export policies are good. And export policies will be good only and only when your government is planning or doing something towards your organization, right? Towards your business environment. So export policies will happen through devaluation also. So which we will talk about devaluation, because devaluation was done thrice in India, in 1949, 1966 around, and then 2011. Devaluation was done to promote the exports. We'll talk about devaluation, what it is. Right? Okay. Now, what are the drawbacks of government interference in business environment? See, it will create red tapeism. A lot of bureaucratic pressure will be there. India being a very much federal nation, there are a lot of leaders available, there are a lot of bureaucrats available, and we need a lot of paperwork, file work to do. So to do business, it is not the right, exactly I would say not the right, I would say it is not easy to establish a business here, right? So you need a lot of paperwork for that purpose. So red tapeism is created because of the interference of government, because government permissions are to be sought and to be taken so that we can have a proper establishment of business. It can be costly, because when we talk about bureaucratic pressure, it will bring in some cost as well, because we need some paperwork, we need some sort of expert services like lawyers and some engineers and something like that, and for that reason the cost will be increasing. Can be inconsistent. So government, see, I would say any scheme can be a consistent scheme for a specific type of industry and can be inconsistent for a specific type of industry. So you cannot go ahead with the same policy for a specific industry, and it might not suit that industry. That's the same policy which was suiting to some other industry, right? So आपने बोला कि 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे लेबर से काम करवाना है, but there are certain industries जहाँ पे 24/7 वर्क चाहिए होगा, एंड उसके लिए आप चाहे 2 शिफ्ट लगाओ, 3 शिफ्ट लगाओ, डिपेंडेंट आप पे या बिजनेस पे है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा वहाँ पे. ये बात आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा उस जगह पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 12 घंटे के मोड पे चले, 12 घंटे से ऊपर के मोड पे चले, जबकि 8 घंटे एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है कि 8 घंटे से ज़्यादा लेबर वर्क नहीं कराना है किसी से, राइट? Can create market distortions. So yes, those policies, those interferences of the government can create market distortion, because market can be divided, and so when a specific segment is close to government, another segment is always away from the government, right? So ये तो एक normal institution में भी होता है, जब कोई एक group एक institution के head के पास होता है, उसके साथ सलाह ले रहा होता है, एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो उसके खिलाफ रहेगा पूरे टाइम,
right? So similar is the structure here. This distortions will happen and some sort of businesses will not like the policies of the government. अब बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी आने से देखिए, अब ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन है इसमें, राइट? जीएसटी आने से हुआ क्या कि आप एक सेगमेंट को खुश कर दिया आपने, कि जो सर्विस क्लास था वो तो खुश हो गया, ओके ठीक है, अभी एक स्पेसिफिक रेट आपको देना होगा टैक्स पे। सर्विस क्लास इसलिए खुश हुआ क्योंकि बिजनेस में कई बार क्या होता था, हमें गाड़ी लेनी होती थी, बीइंग अ सर्विसमैन, राइट? हमें गाड़ी लेनी होती थी तो हम गाड़ी लेने के लिए गुड़गांव या हरियाणा के किसी प्लेस पे जाते थे ताकि वहाँ पे वैट कम पड़ेगा हमको। बट अल्टीमेटली अदर स्टेट्स में लाइक यूपी और दिल्ली इट वाज कॉस्टली, थाउजेंड्स में डिफरेंस होता था, तो इसलिए हम जाते थे दूसरी जगह पे हरियाणा के साइड ताकि टैक्स कम देना पड़े। अब वही एक पॉलिसी आने से सर्विस क्लास तो खुश हो गया कि ठीक है, मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी कार खरीद सकता हूँ, लेकिन वो बिजनेस क्लास दुखी हो गया उससे कि इतना टैक्स हम देंगे कैसे। एंड अभी देखो, अब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नॉट वेरी मच गवर्नमेंट प्रो इन दैट सेंस, टैक्सेशन के स्कीम्स की वजह से, राइट? देन कैन बी पोलिटिसाइज्ड। Okay, so for example, when we talk about politicizing a specific matter, there is a specific bill which government wants to bring in, that is Uniform Civil Code, wherein it will see, or it is trying to analyze that whether this bill will be creating some sort of positive impacts on people which are directly impacted or affected, or is it going to bring in a negative impact which will be seen when we analyze the market or we talk to people. Right, so that is a matter of question we'll have to ask ourselves. Okay, so we'll take a break here and we'll talk about monetary and fiscal policies after the break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before the break, we have gone through the role of government policies in shaping the business environment, as well as we have looked into the drawbacks of the interference of government in the business environment, right? Now we will move forward and look into the monetary and fiscal policy aspect. Talking about monetary and fiscal policies, now if we talk about a particular government or particular economy, any government can use both of these policies to curb the economic situation or to enhance the economic situation of a particular economy. Right? Now, when we talk about monetary policy and fiscal policy, they are run by a different infrastructure in a system. For example, monetary policy is specifically run by the central bank of a country, and fiscal policy are given by the central government of a country or a state government of a country. Let's say, for example, in India, we run a federal government, and because of which state has its own say, or they also have their own infrastructure about or they have their own system about running a government, right? Now, monetary policy, when we talk about monetary policy, it is basically involves actions taken by central bank. So, central bank does take some actions regarding control of inflation. They basically take measures including change in interest rates. For example, normal retail bank rates would be, what would be the exact retail rates of a specific bank? For example, you save a specific amount in the savings bank, right, and a savings account, and you see there is around 5% rate, and all of a sudden, after a year, if you check, the rate is reduced or increased, right? There are some specific retail banks which gives you 5% or 6%. That is their personal case, right? The management of those banks, retail banks, decide about the savings rate which is given. But below a specific rate, any bank cannot go. Like, for example, 2% or 3% is declared by central government, the central bank of a country. That will be the minimum bank rate for saving in a particular saving account. So below that, any retail bank cannot go, right? Below that particular rate, any bank cannot give in return. Now, let's say right now, if it is 2% or 2.5%, which is the rate given by the normal government banks like SBI or PNB or any other bank. So if you save in a particular bank, let's say you save 100 rupees, you get 2 rupees as interest if the rate is 2%, right? So that is the measure, first thing. Then interest rate के अलावा we also talk about money supply. Now money supply को अगर आपने inject करना है economy में to control
inflation or to basically curb the stagflation. Let's say there is no purchasing going on in the economy. Now, इंडिया जैसे कंट्री के लिए बात करें तो वी रन ऑन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब खुदरा मार्केट, रिटेल मार्केट जो हमारा है, जो हम रोड साइड पटरी पे, रेडियो पे प्रोडक्ट्स को देखते हैं अपने आसपास, राइट, कि वो खुदरा मार्केट की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी का है वो वहाँ से आता है, राइट. क्यों? अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने नोट किया होगा कि हमारा जो जीडीपी था वो वेंट टू -7 और -8. वाई डिड इट हैपन? क्योंकि लोगों को शटडाउन या लॉकडाउन के टाइम पे अपना जो दुकानदारी कर रहे थे लोग, रोड साइड पटरी पे जो लोग होते थे वो दुकानदारी कर रहे थे, उनको अब अलाउड नहीं था, जिस वजह से क्या था, जो नॉर्मल परचेजिंग या कंजम्पशन होता था ऑन अ रेगुलर बेसिस वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से लोग पैसा स्पेंड नहीं कर रहे थे. और ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग कि लोगों का साइकोलॉजिकल माइंड इस तरह से हो गया था कि वी वांट टू सेव मोर नाउ. अगर हम सेव करेंगे तो पता नहीं लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा या फ्यूचर में कब हमारे पास जॉब होगी या नहीं होगी, हमारे पास काम होगा या नहीं होगा. फॉर दैट रीज़न दे स्टार्टेड सेविंग दैट मनी विद देमसेल्व्स. बैंक्स में भी नहीं डाल रहे हैं और इधर भी खर्च नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन जो हमारा इकोनॉमी था इट वेंट डाउन, राइट, मेल्ट डाउन था वो प्रॉपर. देन इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्टेबलाइजेस प्राइसेस. नाउ अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? मॉनेटरी पॉलिसीज, सम मेजर्स शुड बी indulged into that. Now, it includes tools like open market operations, reserve requirements, and discount rate. Now, what is open market operation? हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा है सबने, राइट. हमने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा है कि जितना ज़्यादा डिमांड होगी वैसे प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस घटेगा. ये हमने मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है, और भी बहुत सारे मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, राइट. तो अगर हम सिंपल से इस बात को समझना चाहते हैं कि डिमांड ऑपरेशन या बेसिकली मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है, तो मार्केट ऑपरेशंस आर नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म या इस तरह के कोई भी इकोनॉमिक मैकेनिज्म जहाँ पे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स या फिर जो इन्फ्लेशन है दैट इज रेगुलेटेड थ्रू अ स्पेसिफिक मार्केट मैकेनिज्म. ठीक है. नाउ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बैंक्स के होते हैं, सेंट्रल बैंक का भी अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट है, और सिमिलरली आपके रिटेल बैंक्स का भी अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है. तो हर बैंक उस रिजर्व रिक्वायरमेंट के बिलो नहीं जाना चाहती, क्योंकि एनी टाइम कंटिजेंसी हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो सकती है, या फिर कोई कस्टमर नॉर्मली आके अपना पूरा पैसा विड्रॉ करता है, पूरा रुपया विड्रॉ करता है अकाउंट से, तो उस केस में रिजर्व्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है रिटेल बैंक को. इवन इन सेंट्रल बैंक के केस में सेंट्रल बैंक को भी रिटेल मार्केट्स में या रिटेल बैंक्स को बहुत सारा पैसा देना होता है कई बार, जिस वजह से एक स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन करना होता है, राइट. सो बेसिकली सेंट्रल बैंक रन करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ दो चीज़ों की बात करी है, टैक्सेशन की, यानी कि ये तो मेन रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इससे ही कमाती है. टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स, टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. तो तीन तरह के टैक्सेस मेजरली इनका जो इनकम है, और बेसिकली और भी टैक्स है, जैसे कि आरटीओ, जो हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें रोड रजिस्ट्रेशन भी देना होता है कि हमें पूरे इंडिया में घूमने का परमिशन मिल जाए उससे, राइट, उनका रोड चूज़ करने का परमिशन मिल जाए, उस कंट्री में हम गाड़ी फ्रीली चला सकें. देन टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग, हमने जब जीडीपी की बात करते हैं, हम जीडीपी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सी दैट इज कंजम्पशन, सी प्लस आई, राइट, आई इज इन्वेस्टमेंट्स, एस फॉर स्पेंडिंग, एंड X minus M is net exports, right? Now, when we talk about investments or spending is basically अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंड कर रही है, राइट. उस स्पेंडिंग की वजह से क्या कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन हो रहा है, राइट. सो ये सिचुएशन भी कंट्रोल कौन करता है? ये करता है गवर्नमेंट कंट्रोल. ना गवर्नमेंट विल हैव टू से कि मेरे किसी डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे लोगों पे, हमारे इकोनॉमी पे एंड हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट. फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन का जो प्रिपेयर्डनेस नहीं था, डीमोनेटाइजेशन को हमने सीधे सीधे इम्पार्ट कर दिया, राइट. प्राइम मिनिस्टर केन एंड सिंपली सेड कि वो आज से ये नोट बंद है, राइट. अब उससे हुआ क्या कि हमारा इंफ्रा तैयार नहीं था, हमने एटीएम्स में वो सिस्टम्स नहीं बनाए थे, उस तरह के एटीएम्स नहीं लेके आए थे हम जहाँ पे वो रुपया जो नया करेंसी है वो आए, राइट. प्लस बैंक्स भी रेडी नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे.
इट वॉज अ शॉक टू दी होल ऑफ नेशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ है, राइट. And talking about GST also, now let's say GST was implemented in 2017 for the first time, 1st July 2017. Now 1st July 2017 को GST लाने के बाद within 2 years there were around 400 amendments in that law. Now why is it so? क्योंकि आप prepared नहीं थे, आपने law को पूरी तरह से evolve नहीं होने दिया, तैयार नहीं होने दिया, साथ साथ लेके आ गए, राइट. और उसके साथ साथ हम evolution कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कहाँ गलतियाँ करी हैं और फिर हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, राइट. सो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट का कोई भी रूल, रेगुलेशन, एक्ट, बिल पास करना, वो अल्टीमेटली बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म और फिजिकल पॉलिसी, राइट. नाउ इट इन्वॉल्व्स मेजर्स सच एज चेंजेस इन टैक्स रेट. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कोई भी टैक्स रेट में चेंजेस लाने हैं, राइट. जैसे कि जीएसटी में 4 स्लैब दे दिए हमें बोला जा रहा था जीएसटी आने से पहले कि 1 नेशन 1 टैक्स और 1 रेट रहेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन इट केम आउट टू बी कि अभी हमारे पास मोर देन 4 रेट्स है. 5, 12, 18, 28 के अलावा भी वी हैव 3% ऑन गोल्ड, वी हैव 1% ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम, वी हैव अनदर 0.5% ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स, राइट. सो वो चेंजेस टैक्स रेट्स में या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, लेट्स से बजट का चेंज कर देते हैं, जैसे कि डिफेंस को कभी 10% बजट दे दिया अपने टोटल बजट में से, कभी एजुकेशन का रिडक्शन कर दिया बजट का, राइट. सिमिलरली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग बजट दे दिया, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग बजट दे दिया. सो वो परसेंटेज ऑफ बजट, या उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट. अपने टैक्स रेवेन्यू से जो हमने कमाया, गवर्नमेंट ने जो कमाया रुपया, उससे वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट. ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स आर रन बाय गवर्नमेंट. आपका मेडिकल बेनिफिट्स कितने सारे होते हैं, राइट. एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन की बात होती है जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है. एंड देन देयर आर गवर्नमेंट रन कॉलेजेस, गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. Talking about the management, so here management is done by the Ministry of Finance, right. Moving to other differences as well. Now when we talk about monetary policy, it focuses on stability of an economy. So मान लेते हैं हम कि stagflation हो गया है. स्टैगफ्लेशन एक तरह का स्टेबिलिटी नहीं है. स्टैगफ्लेशन है कि सारी खरीद फरोख्त रुक गई है, राइट. यानी कि आप जो इकोनॉमी को बूस्ट होते देखना चाहते हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग. पीपल आर वेरी इनडिफरेंट अबाउट बाइंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, राइट. उनका पैसा उनके पास आ रहा है, यानी कि पैसा भी एक लिमिट में आ रहा है और उसके बाद वो खर्च भी एक लिमिट में कर रहे हैं, राइट. कोई ग्रोथ ना उनके पैसे में हो रही है, उनका इनकम में हो रही है, और ना ही उनके स्पेंडिंग में हो रही है. दैट इज स्टैगफ्लेशन. सो अगर उसको स्टेबलाइज करना है तो क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं उनको परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा लॉकडाउन के सिचुएशन में एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था. वो इसलिए अनाउंस किया गया था क्योंकि हमारा कंट्री ऑलमोस्ट जीडीपी में -7, -8 पे जा चुका था, राइट, परसेंटेज में. एंड उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हमारा जो रिटेल मार्केट था, जो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो लोग उतना कमा नहीं पा रहे थे, उतना समझ नहीं पा रहे थे मार्केट में वापस कैसे आना है. तो गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया कि आप आइए, हमसे लोन लीजिए इंटरेस्ट फ्री या फिर लोअर रेट्स के साथ, और हमें जब आपके पास हो जाएगा तो हमें वापस दे दीजिएगा. बट यू स्टार्ट योर बिजनेसेस, यू स्टार्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेरी सून, राइट. टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट्स, it improves with higher interest rates. Now गवर्नमेंट का सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपका एक्सचेंज रेट भी मैनेज करके रखना है, क्योंकि अपने कंट्री का या किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी स्ट्रक्चर यानी कि बैंक जो रन कर रही है. सो कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगी कि उस कंट्री के जो करेंसी है उसका वैल्यू ना हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉलर का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है क्योंकि उसने पेगिंग उस तरह से करी, राइट. अभी हमने रिसेंटली एक पेगिंग करी थी रशिया के साथ, रूबल के साथ, कि हम उनसे जो कुछ खरीदेंगे हम अपने करेंसी में देंगे और वो हमसे अपने करेंसी में खरीदेंगे. तो सिंपली हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट में थे और हम एक दूसरे के साथ उनके करेंसी जो एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो हम मेंटेन करवाना चाहते थे, राइट. सिमिलरली टारगेट्स इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि इन्फ्लेशन कैसे कर्व होता है एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बोरोइंग ऑफ एन इकोनॉमी. सो अब मॉनेटरी पॉलिसी विल लुक इनटू कि हमारे देश पे
कितना हमने लोन ले रखा है, राइट, वर्ल्ड बैंक से कितना लोन है और कंट्रीज़ का कितना लोन है, हमें कितना पैसा वापस देना है किसी का, राइट, विद इंटरेस्ट रेट। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये मैनेज करना एक बैंक का, सेंट्रल बैंक का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंपली पाकिस्तान की, राइट, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है अभी करंटली, इतना सारा कंट्रीज़ का लोन, लेट्स से फॉर चाइना का लोन एक उनके ऊपर, देन दे आर ऑल्सो रनिंग फॉर लोन्स फ्रॉम रशिया, दे आर रनिंग फॉर लोन्स टू डिफरेंट कंट्रीज़। अब वर्ल्ड बैंक से ऑलरेडी लोन ले रखा है तो उनका जीडीपी ऑलमोस्ट माइनस में है। इन्फ्लेशन आप सुन ही रहे होंगे, छोटे छोटे वीडियोस में आपको क्लिप्स में दिखता होगा, रील्स में दिखता होगा कि पाकिस्तान में व्हीट फ्लोर या आटा कितना महंगा हो रहा है, या फिर पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, या फिर यू वुड हैव हर्ड अबाउट गैस सिलेंडर, ये सब चीज़ों के बारे में कि ये सब महंगा हो रहा है। वो महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है उनकी, राइट। सो उस इकोनॉमिक सिचुएशन को कर्व करने के लिए देयर आर monetary policies as well as physical policies. So we'll talk about physical policies now. So physical policies में they focus on growth of an economy. कोई भी गवर्नमेंट अपने, जैसे कि stable अगर गवर्नमेंट है, see I am considering an ideal situation where the government is stable, right? We are not talking about those situations जहाँ पे गवर्नमेंट बदलती रहती है, turbulences होते हैं, political turbulences होते हैं, right? So we'll talk about it focuses on growth of an economy. Let's say हमारी जो economic situation है, लेट्स से आज हम 7% जीडीपी तो हम टारगेट करना चाहते हैं, और आईएमएफ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी बोला है कि इंडिया अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, राइट, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इन 2030 और 35 वी विल अचीव व्हाट वी हैव थॉट ऑफ कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, या फिर जो भी हमने सोचा है। नो इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। सो नो इम्पैक्ट मीन्स कि एक्सचेंज रेट पे इनका कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का, राइट। या हो सकता है कि कभी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाए, पॉलिसी चेंजेस की वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाए, जैसे कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो कई लोग एडमेंट थे कि जीएसटी में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, और जीएसटी में कन्वर्ट होने के बाद दे फाउंड आउट कि चलो एक ही रेट ऑफ टैक्स तो देना है हमें, राइट, कस्टमर्स को एक ही रेट ऑफ टैक्स देना है। यानी कि जो हम पहले 28-30% टैक्स दे रहे थे वैट और सर्विस टैक्स और सर्विस चार्जेस के साथ, वो सब घट के हमारे पास सिर्फ एक रेट ऑफ टैक्स में आ गया, मैक्सिमम 28% है, वो भी लग्जरी गुड्स पे। अब वी टॉक अबाउट दी ईटेबल्स कंजम्पशंस, राइट, वो 5% या 12% रेट पे है, राइट। सो डज नॉट हैव एन स्पेसिफिक टारगेट। सी इनका जो गवर्नमेंट का एक ही सिंपल सा टारगेट होता है कि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अब स्पेसिफिकली एक्सचेंज रेट पे काम करना है या किसी एक चीज़ पे काम करना है। ऑल ओवर वेलबीइंग ऑफ एन इकोनॉमी इज द ऑब्जेक्टिव एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बजट डेफिसिट। सो लेट्स से एक कंट्री का बजट डेफिसिट में है, राइट, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे पास बजट ही अलाउ नहीं कर रहा है हमें कि हम कुछ डेवलपमेंटल फेज स्टार्ट कर सकें, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इफ ग्रोथ इज ओके, इफ इट इज राइट, देन बजट डेफिसिट नहीं होगा। बट अगर ग्रोथ उस एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रहा है जो हमने सोचा है, गवर्नमेंट ने सोचा है, तो उस केस में वी माइट सी द बजट डेफिसिट पार्ट एज वेल। सो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स it implemented by central banks include open market operations. So आपके buying और selling government securities to control the money supply and influence interest rates, which means कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेती है, वापस बाय बैक कर लेती है और मार्केट में वो पैसा इन्फ्यूज कर देती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सरप्लस पैसा होता है तो क्या करती है, तो वो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऑफर करती है कि आप खरीदो और इससे इंटरेस्ट कमाओ या फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा इसके थ्रू, राइट। सिमिलरली ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, वो या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे चाहिए आज की डेट में सर्कुलेशन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, पैसा घुमाना है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मेरा पैसा जो बैंक में रखा है वो मैं उठा के मार्केट में डाल रहा हूँ, आप मेरे को मेरे बॉन्ड्स वापस कर दो, मैं बाय बैक कर लूंगा। और जब सेल करने की बात करते हो, सेल करने का मतलब होता है कि आपका पैसा हम अपने पास लाना चाहते हैं और वो सर्कुलेशन में अगेन लाना चाहते हैं मार्केट इकोनॉमी में। तो हम आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं और आपको दे रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं बीइंग अ बैंक, और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे जगह जगह। जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पैसा कमाएंगे और वैसी कमाए हुए पैसे से आपको भी ब्याज देंगे, हम उसको आपको भी इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे, जो भी आप समझते हैं, राइट। सो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करना थ्रू मार्केट ऑपरेशंस। Reserve requirements mandating the amount of reserve commercial banks must hold affecting the availability of credit.
सो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है रिजर्व बैंक के पास और हर किसी रिटेल बैंक के पास कि वो मिनिमम एक अमाउंट ऑफ करेंसी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी अदर कंट्री और अपनी कंट्री का भी एक करेंसी हमेशा रखेंगे, राइट। CRR बोलते हैं जिसको, राइट। सो यहाँ पे बात सिंपल सी इतनी है कि एक अमाउंट ऑफ रिजर्व हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। सेंट्रल बैंक करती है ऐसा ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो यूज कर सके उस फंड को, ताकि गवर्नमेंट और इकोनॉमी सर्कुलेट कर सके या फंक्शन कर सके प्रॉपरली, राइट। मूविंग टू डिस्काउंट रेट, setting the interest rate at which commercial banks can borrow funds from central bank, impacting borrowing cost and liquidity. अब ये इसे बोलते हैं हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, राइट। आपने सुना होगा कि आज की डेट में रेपो रेट क्या चल रहा है और रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। रेपो रेट उसके लिए जब रिटेल बैंक को चाहिए लोन और पैसा तो वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं और वो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, राइट। अब वो इंटरेस्ट रेट क्या है कि उसे बोलते हैं हम रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब रिजर्व बैंक को अपना रिजर्व बना के रखना है और उसके बाद जब सेंट्रल बैंक से पैसा लेना, रिटेल बैंक से पैसा लेना पड़ता है, किसी भी रिटेल बैंक से, SBI ले लो या कोई भी बड़ी बैंक, उससे पैसा लेना है तो उधर रेपो रिवर्स रेट चलता है, राइट। तो उधर पे जो हमारा रिटेल बैंक है वो चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक से कि भाई हमें रिवर्स रेपो रेट चाहिए, राइट। सो डिस्काउंट रेट आपको क्लियर है। देन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एडजस्टिंग की इंटरेस्ट रेट्स सच एज द फेडरल फंड्स रेट to influence borrowing cost, investments and the consumer spending। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसका जिस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे सो दैट उनकी इकोनॉमी बूस्ट करे और वो सर्कुलेशन ऑफ मनी बना रहे मार्केट के अंदर। तो अगर कंज्यूमर, यहाँ पे अल्टीमेटली जो जिस्ट है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसे होगी, जब लोग पैसा मार्केट में अपनी जेब में, अपने हाथ में स्पेंडिंग के लिए डिस्पोजेबल इनकम रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, जब उनके हाथ में पैसा आएगा अर्निंग के थ्रू या फिर थ्रू लोन डिसबर्समेंट। तो आप नोटिस करते होंगे कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको कॉल करती हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती हैं सो दैट आपके अनवांटेड डिमांड्स भी जनरेट कर दें, राइट। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है इन एन इकोनॉमी वो तो बढ़ जाएगा, बट आपका पर्सनल जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, एक तरह से डेट क्राइसिस में जो फंस रहे हो आप, वो अलग बात है, राइट। बट यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा क्या अपने ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देती है। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा था, आपको याद होगा एक वीडियो में, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया था कि जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें एक कंट्री करती है उधर को उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो करंट अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस या उस तरह के ट्रांजैक्शन हमेशा ज्यादा चाहिए होते हैं किसी भी कंट्री को। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एडजस्टिंग की इंटरेस्ट रेट सो दैट लोग लोन ज्यादा से ज्यादा लें या फिर कोई भी फंड है वो ज्यादा से ज्यादा उठाए मार्केट के स्पेंडिंग के लिए, राइट। ओके, अगेन टैक्सेशन। सो फिजिकल पॉलिसी मेजर्स इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट। सो अभी हमने पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक ने लिए थे, राइट। अब ये हम पढ़ रहे हैं फिजिकल पॉलिसी मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली लेती है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट के हाथ में टैक्सेशन है तो टैक्सेशन को GST लेके आ गए या फिर टैक्स नॉर्म्स बदल दिए, टैक्स रेट्स बदल दिए, राइट। सो हमने अभी सुना होगा GST काउंसिल में कई बार कुछ प्रोडक्ट्स को उठा के हम 5% से उठा के 12% में रख देते हैं, 12% के अलावा 18% परव्यू में डाल देते हैं कि अब ठीक है जो मिल्क है वो नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो उस पर हम कोई 5% टैक्स लेंगे, और अगर हमें लगता है कोई प्रोडक्ट लग्जरी है तो उसको हम सीधे 12% से उठा के 28% में रख देना। वो काउंसिल के डिसीजन हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप करी है वो काउंसिल कमेटी मीटिंग कमेटी जो कि डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, राइट। सो टैक्सेशन बदलने से क्या होगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो कई बार मेजर्स लेना चाहती है, जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि अभी स्पेंडिंग थोड़े से रुक जाए आज की डेट में, तो हमेशा स्पेंडिंग रोकने के लिए क्या करेंगे, टैक्स इंक्रीज कर देंगे। तो आपका जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है हमें, राइट। तो वो क्राइटेरिया था वैट के टाइम पे, या आप देखते होंगे जब हमें ऑलमोस्ट 27 to 30% अपने स्पेंडिंग का टैक्स में देना होता था, राइट। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग नाउ एडजस्टिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स टू इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने बजट सेशन सुने होंगे कि भाई आज डिफेंस सेक्टर को इतना मिला, इतने करोड़ मिले, या एजुकेशन सेक्टर को इतना % ऑफ बजट मिला है, या
डिफेंस सेक्टर के अलावा आपका हेल्थ केयर सेक्टर में इतने हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, उसके लिए इतना फंड एलोकेट हुआ है, राइट. सो ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेरन वो बजट एलोकेशन में ही आता है कि कितना स्पेंड करने वाली है गवर्नमेंट अपने बजट से, राइट. ट्रांसफर पेमेंट्स, ना प्रोवाइडिंग बेनिफिट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर विच डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग. अब कुछ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में, उनके पास पैसा नहीं है स्पेंड करने को, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है स्पेंड करने को, तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट उनको एक गारंटी स्कीम के थ्रू देती है कि ठीक है आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे हम, राइट. एक फंड अलोकेट हो जाता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड पीपल, राइट. उस केस में क्या सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, आपके पास कुछ पैसा कम से कम रहना चाहिए खर्च करने के लिए इकोनॉमी के अंदर. सो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट. देन वी हैव बजटरी पॉलिसीज, बैलेंसिंग गवर्नमेंट बजट्स, managing deficits or surpluses and controlling public debt to ensure fiscal stability. So हमारे जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो उधारी है उसको जितना कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, दैट इज वन ऑफ द मेजर्स, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. फिर गवर्नमेंट बजट को किस तरह से यूज करना है, जो रेवेन्यू है उसको बजट की तरह किस तरह से यूज करना है, कैसे एलोकेट करना है, एंड देन हाउ टू मैनेज दी डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस. मान लो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में हमारे पास सरप्लस और किसी स्पेसिफिक सेक्टर में हमारे पास डेफिसिट है, मतलब हम उधर उसको बैलेंस आउट करना कि उस सेक्टर का जो बजट है उधर बैलेंस आउट कर दिया जाए, राइट. सो दीज ऑल एक्टिविटीज विल encompass the fiscal policies, and that is the end of the video. We have gone through fiscal policies, monetary policies, and what are the exact form of fiscal and monetary policies, the measures taken by central government, measures taken by the central bank of a specific country. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.